आईफोन 11 आया है जो कि डेड कंडीशन में है। एक बार हम क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई में देख लेते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। एम्पियर लेता है कि ऑटो एम्पियर ले रहा है वो हम चेक करेंगे। तो पावर स्विच प्रेस करेंगे। ये देखो हमने पावर स्विच को प्रेस किया। देखो 120-25 के आसपास में जाके रुक जाता है। फिर से हम चेक करेंगे। ये देखो हमने पावर स्विच को प्रेस किया। ये लो बूट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर सीपीयू का प्रॉब्लम है। तो चलिए मदरबोर्ड को सेपरेट करके हम सीपीयू रिवॉल्व करके देखते हैं।
हमने सीपीयू को रिबोल कर लिया है। एक बार डीसी पावर सप्लाई में फ़ोन को ऑन करके देखेंगे। ये देखो, अब हम पावर स्विच को प्रेस करेंगे। देखो फ़ोन लोगो पे आ चुका है। अभी बूटिंग प्रोसेस में है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखो फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।